and his theme of talk will remain on material, content, and answer writing. Okay, so I welcome you, sir. Good afternoon, everyone. Honorable Indiresh Saw, sir, founder director of PSYCHE World IAS, dignified IAS topper Subham ji, and respected faculty, history faculty, Kamal Khan sir, and capable and young minds students. The theme for assembling here is how to assure your rank in UPSC. Okay. So already the IAS topper Subham ji and veteran faculty Kamal Khan sir have discussed so many points. Of course, they are very valuable and reasonable. Still, there are some points which to be taken into consideration for cracking UPSC. Always think that there is nothing in the world to be impossible, as in the words of Hitler. Okay, very known philosopher Benjamin Franklin, he told that education, the noble purpose of education is to replace empty mind with an open one. Absolutely, this great saying lies upon the cracking UPSC. A student who is going to crack the UPSC, qualify the UPSC, he should be quite open one-minded, not closed one. Okay. As you know, very simple, that this is a three-phase, three-tier examination, preliminary, main, and interview or personality test. Okay. First of all, see how can you crack preliminary, because my concerned discussion is here, content, material, and answer writing, but I'm going to a little bit regarding a strategy, in very brief. See, one paper is making your score list, merit list, that is just paper one. Okay. And second one is the CSAT, that is qualifying in nature. As rightly said Subhamji, that you have to do so much questions in paper 2 CSAT so that you can qualify, and majority of it depends on English. So regarding improving English, this is very basic, that you should know basic grammar, and after that you can go through any newspaper, English newspaper, any of them. Most prescribed one is the Hindu. Okay.
and not all things to be studied, to be read there, because it will take more than 3 or 4 hours a daily. So first of all, you can go through editorial, and then business, and then international. This is enough. 3 topics of any newspaper, whether this is the Hindu or Indian Express or Times of India, the Hindustan Times, anyone. So you can improve your English, and that will be beneficial for you in 2 ways. How? To qualify preliminary in sense of CSAT, and secondly, in main, as one paper is essential paper is of English, as you know. Okay. And then you can do only attempt correct questions up to 68. So in short time, as Ms. Palak has asked Shubhamji, that how can we crack UPSC in short time? This is very fundamental to arrange your time, because to get maximum marks, more and more, your main focus to be on main. But without qualifying preliminary, you can't enter the door of main exam. Okay. So for that purpose, if you are going to strengthen, improve, enhance your English, it will benefit you in 2 ways: in preliminary, in CSAT, and in essential paper. And if you don't get qualifying marks in either of the essential paper, either of the 2, your question, your paper is further not going to be evaluated. So this is the fundamental of UPSC main. So for that purpose, improve your English. Secondly, come to GS paper 1. If you do 4 parts with full effort, with your concerted effort, you can crack preliminary. How? First one is economy, because it directly, it is generally asked 20 questions from economy in preliminary if you go through last 5 to 6 years preliminary paper. Okay. And 6 to 8, as I have already mentioned in my regular classes, 6 to 8 with the current. Okay. So in total, it carries 26 to 28 questions. And you have to make correct questions maximum 68. If you have done 68 questions correctly, your selection in preliminary is sure. Okay. Second one is geography along with environment ecology. Okay. Means minimum. Because since IFS, Indian Forest Service, preliminary is also conducted along with this main UPSC civil services. That's why environment part has been given extra weightage here. The basic reason behind it. So if first one is economy, second one is geography and environment, third one is history. Generally, history weightage goes to decrease. Still, it is above 50. Still, you can leave polity and constitutional part, because it only carries 4 to 6, means below 10, and you have to do so you can. So first one is economy, second one is geography and environment, third one is history, and fourth one is current affairs. Only 4 sections. If you are not from science background, you can leave it. Means minimum. If you do this 4 section in GS paper 1, certainly you will crack your preliminary. Now come to main. Okay. The 2 papers are essentials, English and Hindi. Then you know that there are 4 papers in GS, each carrying 250, and 1 essay 250. So in total 1250, and 1 optional paper of 2 carrying 2 papers, paper 1, paper 2, each 250, in total 500. So total main paper, out of which you will be merit making, will be 1750 marks, and 275 is for personality test or interview. Okay. So in total 2025. Now, what the material should be read, studied, or content? How can you prepare and then answer writing? Okay. This is the most fundamental topic, course topic of cracking UPSC. Okay. As I have already said in my regular classes,
you should have proper knowledge regarding interlinkages of subjects, as Shubhamji has also mentioned. Okay, interlinkages. Just for example, see that comparison of India and China. Okay, this carries in UPSC in more than 2 papers. Okay, how? One is in IR, International Relations, as you know, paper 2. Okay, one is in economy, paper 3, and one is in current affairs. So if your fundamental is clear that what are the basic reasons behind the dragon growth of China and what are the basic reasons behind the elephant growth of India, you will amply clear your question paper, your answer in all the 3 papers. Now, this is the way. How can you interconnect? How can you link the answers? Suppose here, one question globally very highlighted that concentration of wealth and inequality. Inequality is the part of economy as well as part of the social justice as well as the part of international relations and current affairs. So see, if you have knowledge, then you can do in either of the paper. Correct? First one is so interlinkages of the topic subjects. Second, how can you write answer properly? See, traditionally, there are 3 parts of a model answer writing. 3 parts. First one is introduction in very 20 to 40 words. If this is of 10 marks, which length is of up to 150 words. Okay, so there should be 20 to 30 words introduction. Then main body. Try to understand. That will be more elaborated one, and then roundabout approx 60 words conclusion. Okay, so this is the length of the 3 parts: introduction, body, and conclusion. Now, how will we write? First of all, you will choose the keywords hidden in the question. This is the core of the question. How anybody gets very good marks and how anybody gets very ordinary marks, this is the difference. If a student, if an aspirant gets the keyword in the paper hidden, and if he elaborates it, he will get certainly very good marks. So first of all, try to understand the keywords. So these keywords should be mentioned in introduction. Then you elaborate your answers in that body. And as Shubhamji also said you, that should be substantiated by data. If you substantiate your answer with data, you will get much better marks. He said you that your marks will increase by 1 or 2 marks, but I say that minimum 3 or 4 marks. So if there is requirement of data, so the answer should be substantiated by the reasonable data. This is required anywhere. Now, second one is that if you see any question during the examination hall and your mind get blackout, what can you do? At that point, Mr. Shubham has correctly said that you can do anything. Thank you. Everybody knows English. Are you getting? We are bilingual. किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए. Okay. So यदि आप black out हो जाते हैं, if you go black out there all of a sudden, what can you do? You never leave the question. Never. Just conclude some idea from there. And if you can't provide your language, you can draw there a diagram, flow chart, whatever, on some simple common sense conclusion should be there. You will get some marks. Okay. When I was giving my main, my optional was history. Then one question in paper 2, there were time was only 6 minutes left, and full length question. Just I wrote 3-4 lines, sentences, introduction, then points, no detail. There was no time at all. मैंने points डाल दिए. उस समय में पेपर होता था 300 का.
एक पेपर और एक पेपर 600 हमारे टाइम। आई गॉट 311 311, दैट वाज अ वेरी फैंटास्टिक मार्क्स इन हिस्ट्री। सो कहने का मतलब कि आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं आ रहा तो आप अपने अंदाज पर उसको लेके चलेंगे। अगर गलत डायरेक्शन में गया तो ऐसे ही 0 था, ठीक है, नहीं देगा, निगेटिव में तो जाना नहीं है। अगर आपका डायरेक्शन सही रहा, इफ योर डायरेक्शन इज पॉजिटिव, देन यू विल गेट सम मार्क्स। अब आइए, ये हो गया आपका आंसर राइटिंग। अब उसमें देखिए 3-4 तरह के वर्ड्स यूपीएससी मेन क्वेश्चन में यूज्ड होते हैं, जरा सा देखिए। एक रहेगा कमेंट, एक रहेगा क्रिटिकली एनालाइज, एक रहेगा इलूसिडेट, एक रहेगा इलोबरेट। समझ रहे हैं? सारे वर्ड के मीनिंग अलग हैं, जरा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। व्हाट आई वांट टू कन्विंस यू, ओके, कि उसके मीनिंग अलग होते हैं। जब इलोबरेट है तो वॉट एवर द लाइन हैज बीन गिवन, जस्ट यू गो टू एक्सप्लेन इट, नाइदर पॉजिटिव व्यू नॉर नेगेटिव व्यू। सेकेंड वे, कि योर व्यू इन द आंसर राइटिंग शुड बी न्यूट्रल और मिडिल पाथ, न्यूट्रल और मिडिल पाथ, नेवर बी एक्सट्रीमिस्ट इन राइटिंग योर आंसर। जैसे मैं उस दिन प्लानिंग का एक एग्जांपल दिया था इन रेगुलर क्लास, तो आपने देखा, मैंने कहा कि ड्यू टू द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय मिस्टर नेहरू, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, indicative planning, our growth rate was comparatively less and private sector could not develop well, but it should not be written by you. You can explain it another way, that due to the demand of the time and the condition of the country, such type of policy was adopted, which was reasonable and relevant at that time. आप किसी गवर्नमेंट को अपने आंसर राइटिंग में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी, इफ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड योर बाय dint of your hard labor, if you are going to become an IAS, you are going to be a part of that very government. How can you criticize that very your boss, since you are a part of that? They are top policy makers, they provide you policy directions and you have to implement. Any administrative officer, main responsibility is to implement the rules and regulation framed by the government. Okay, so you cannot adopt. If there is a question mentioning critically analyze, then you put your some views regarding this, that there are some shortcomings in this policy. Okay, जैसे सब्सिडी की बात है, very hot topic. This may be current affair, this is purely economic. Okay, so if subsidy, now the theory is coming that people input subsidy to be replaced with the DBT, and it is being phase wise, डायरेक्ट उसके अकाउंट में दीजिए। क्या होगा उससे? ट्रांसपेरेंसी पूरी आएगी, जो गया सेंट परसेंट जाएगा। अब यहाँ अगर आपको एक कोटेशन हो, इन्होंने कहा अगर आप कोटेशन देते हैं फेमस लोगों का, सही कहा था राजीव गांधी ने अपने एक भाषण में, कहा था कि आई नो वॉट एवर द गवर्नमेंट रिलीजेस फॉर द कॉमन मैन, फॉर द पीपल, ओनली 15% रीचेस टू द टारगेटेड पीपल, 85% इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द इंटरमीडिएरी। मध्यम बीच के बिचौलिए ही 85% खा जाते हैं। इन हिज वेरी पॉपुलर एड्रेस, द देन पीएम राजीव गांधी कन्फेस्ड दिस थिंग। आप इसको कर सकते हैं कोट। हमने डिफरेंट डाटा दिया इनइक्वालिटी का, अभी सोशल बिजनेस का बताया था। अब ये सोशल बिजनेस टर्म आप सोशल जस्टिस में भी यूज कर सकते हैं, आप इकोनॉमी में भी कर सकते हैं, सोसाइटी में भी कर सकते हैं। जब तक अब न्यू अप्रोच आ रहा है बिजनेस का, ये कह रहा क्या कि कैपिटलिस्ट फ्लॉप कर रहा है, कैपिटलिस्ट फ्लॉप कर रहा। मैंने बताया एज नोटेड इंडियन इकोनॉमिस्ट अरविंद सुब्रमण्यम जी said this capitalism as stigmatized capitalism, and in place of this Muhammad Yunus, I have this book with at that very table, A World of 3 Zeros, उसमें उन्होंने कहा कि सोशल बिजनेस को कीजिए, और उसको इंडिया फॉलो कर रहा है। और ये लग रहा है अब कि आफ्टर पेंडेमिक ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो गया सोशल बिजनेस पर। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे एफएम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया,
अनाउंस किया कि हम सोशल बिजनेस को स्टार्ट करेंगे इन द बजट 21-22, जिसको इस बार इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करेंगे, जिसमें लिस्टेड कौन सा होगा, तो लिस्टेड होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए फंड रेज भी करना है, माने उनका बेसिक पर्पस क्या है, सेल्फलेसनेस है, टू सर्व द कॉमन मैन, टू सर्व द पुअर, टू सर्व द नीडी पर्सन्स। सो ये अप्रोच आपको डिफरेंट आंसर में जाएगा। सपोज कि आपका हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर, ओके, वहां आंसर लिख रहे हैं, स्तूपास आ गया, बुद्धा स्तूपास, आपने सारा डिस्क्रिप्शन दिया, ये यहाँ है, ये सांची में ये है, लेकिन वहां ये क्यों है, कुछ रेलिवेंस हमको बता सकते हैं? जब भी कोई आर्किटेक्चर बनता है माय डियर, जरा ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा, उस समय वहां दो बातें होंगी, एक तो उस रिलीजन के प्रति लोगों का एटलीस्ट पैटर्न जो उसके उसका इंक्लिनेशन होगा, सेकेंडली उस समय इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उस एज में, उस डायनेस्टी में, उस रीजन में होगा ही होगा। इसका एग्जांपल देखिए कि अकबर का जो रीजन था, जो अकबर का पीरियड है, बहुत रिफॉर्मिंग पीरियड है, बट गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड वो अकबर के पीरियड को नहीं कहा जाता, वो किसको कहा जाता? अरे भाई मुगल में हम कर रहे हैं, मुगल पीरियड में क्या, गुप्ता को तो हम समझ गए एंशिएंट इंडिया में, वो शाहजहां का पीरियड कहलाता है, बिकॉज द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाज ऑन द पीक। और उसी समय आप देख रहे सबसे ज्यादा मुगल पीरियड में जो आर्किटेक्चर बनता है वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां। दिस इज द बेसिक रीजन। किसने बनाया, क्या बनाया, कौन लेबर था, कौन ये था, उसके हाथ काटे, उसका ये नहीं, फंडामेंटल ये है। आपने सारा कुछ लिखा, ये लाल है, ये पीला है, ये इतने में है, ये मजदूर बना, सब कुछ सही है, ये एक, बट इफ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब दिस इज बिकॉज वहां क्या है, पैसा बहुत है, तो उसका फिर नए स्कल्पचर पर उसका ध्यान कर रहा है, इंक्लाइन कर रहा है वो, वो कंस्ट्रक्शन होगा। तो क्या पाएगा वो इवेल्युएटर कि इसके पास कॉन्सेप्ट है, जैसा कि राइटली इन्होंने शुभम जी ने कहा कि इवेल्युएटर के पास बहुत समय नहीं होता है, कॉपी के लिए स्पेसिफाइड है, जो कि बहुत नॉमिनल पैसा मिलता है, तो वो शुरू के 2-4 आंसर उन्होंने कहा ग्लांस करता है, लेकिन होता फैक्ट ये है, आई गिवन 4 टाइम्स यूपीएससी में इन अ रो, ओके, तो होता ये कि वो देख लेता 3-4 आंसर ये है, तो वो समझ जाता है लड़का स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो जब आपने अगर ये यू हैव पुट फॉर दिस पॉइंट कि ये इस कारण से हुआ, आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। अभी मैंने चाइना और इंडिया का बताया, उसमें एक कारण है, उसमें इकोनॉमिक कारण भी है, उसमें ज्योग्राफिकल कारण भी है। अब ज्योग्राफिकल आपको कोई कारण ही पता नहीं होगा, तो जब इंटरलिंकेजेस समझेंगे, किसी भी कंट्री में एफडीआई ज्यादा होगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, उसके लिए बहुत जरूरी है वहां का डायस्पोरा का अवेयरनेस। और चाइनीज डायस्पोरा क्या है कि मैक्सिमम वो अक्रॉस द हार्बर ऑफ हांगकांग रहते हैं, जबकि इंडियन डायस्पोरा कंपैरेटिवली बहुत दूर रहते हैं, कनाडा, यूएस, लंदन। तो जब नजदीक वाले क्या करेंगे, कन्विंस करने में वो ट्रस्ट और इंटरमीडिएट का काम करते हैं, इंटरमीडिएरी का काम करते हैं, तो वहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। तो एक तो मैंने इकोनॉमी को बताया, दूसरा मैंने आपको ज्योग्राफिकल बता दिया, तीसरा जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होगा। जब आप ऐसे लिखेंगे ना, आपको डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा देना है सर, तो वो जरूरी नहीं है, आपको इशूज डायमेंशन दिखाना है, इकोनॉमिकली दिस इज, पॉलिटिकली दिस इज, geographically this is, and geopolitically this is. Now your answer going to be a mathematical answer and you will get full marks or even more than 80%. So this is the basic. Now material resources आपको उस दिन में बताया, आज शुभम जी भी ने बताया। मैंने इकोनॉमी में आपको कितनी किताबें बताई, सिंगल वन, वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू, आप उसको देखिए, नोट्स देखिए, उसके बाद एक बुक ले लीजिए नितिन सिंघानिया जी की, वही लिखा था मैं, आज आईएएस टॉपर ने भी यही बताया। दिस इज द फैक्ट, नहीं तो आप मडल्ड हो जाएंगे, मडल्ड, मगअप कर जाएंगे उन डिफरेंट सोर्सेस के बीच में, जैसा कि कमलकांत सर ने भी कहा कि अपने घर को लाइब्रेरी में एक्यूरेटली। लेकिन अप्रोच क्या होना चाहिए, तो सोर्सेज आपका। अब नितिन सिंघानिया की किताब मैंने क्यों बताई, उमा कपिला भी है, बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट, वो इसलिए बताया कि यूपीएससी के स्टूडेंट को डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, अ स्टूडेंट शुड बी जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। तो वो इस किताब की खासियत क्या है नितिन सिंघानिया की किताब की, कि वो किताब अपडेटेड है, काफी अपडेटेड है, जो चीज आपको जानना चाहिए, एनएसओ कहाँ पर है, प्लान नॉन प्लान हट गया, आज इन्होंने बताया ना 5 ईयर प्लान हट गया। अब जब हमने प्लानिंग नहीं पढ़ाया आपको, 5 ईयर प्लान कब हटा भाई, कैसे हटा, केवल 5 ईयर प्लान जो है सो 2012 से 17 तक है, और इन्होंने क्या किया, नीति आयोग बना दिया, जो ही नीति आयोग बना आफ्टर द डिसमेंटलिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन, करेक्ट। तो न प्लानिंग कमीशन जब है ही नहीं तो प्लान हट गया, और जब प्लान हट गया तो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी बजट से हटा। दिस आर इंटरलिंक्ड।
और फैकल्टी का काम ये होता है कि आपको इन चीजों से अवगत कराना, लिंक करना कि देखिए सिंस बिकॉज कॉज ये है तो इफेक्ट इसका ये हो रहा है। वैसे किताब में आप स्टेट नहीं समझ पाएंगे। तो आंसर राइटिंग जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर क्वालिफाइंग और क्रैकिंग यूपीएससी इज हाउ टू राइट योर आंसर। इसके लिए सबसे पहले कि आप वर्ड देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, इलुसिडेट दे रहा है, कमेंट दे रहा है, क्रिटिकली एनालाइज दे रहा है, एक्सप्लेन दे रहा है, क्या दे रहा है। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड देयर। ओके, जब आर्ट एंड कल्चर आप पॉलिटी ही कर रहे हैं सपोज, अभी जैसे इस बार देख लीजिए आइदर ऑफ द टू, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज एक्सपेक्टेड इन कमिंग यूपीएससी में, बिकॉज ये दोनों ही इस बार है। लेकिन हो सकता है कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल ब्लैक आउट ही यूपीएससी कर दे, क्लियर के खूब करकेंगे। लेकिन आपको प्रोसेस पूरा समझना है, कैसे होता है, क्या रेलिवेंस है, कहाँ सेक्रेट है, क्रॉस वोटिंग क्या है, सारा गो थ्रू आपको होना। फिर इसका थोड़ा आप इंटरनेशनल कंपैरिजन भी डाल सकते हैं। जस्ट पहले मुझे करने दीजिए, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेट्स आर मोस्ट वेलकम। तो आप थोड़ा इंटरनेशनल कंपैरिजन भी दे दीजिए। हमारे यहाँ ये 5 इयर्स का है, फ्रांस में कहीं पर 6 इयर्स का है, यूएस में 4 इयर्स का है। तो लगेगा देखिए आंसर आपको बहुत स्पेसिफाइड लिखना है, लेकिन क्या कहा शुभम जी ने भी कहा कि जो रीजनेबल एग्जांपल दीजिए, आपको आपके स्पेसिफाइड आंसर के साथ साथ आपको अपने नॉलेज के एक्सपेंशन का भी उसी आंसर में शो करना है। दिस इज द आर्ट ऑफ राइटिंग, करेक्ट। ये है, ये तो शो करना ही होगा, उसको समझना होगा, क्योंकि आपको ये ग्रेजुएट लेवल एसएससी का अफसर बनाने नहीं जा रहा। इंडिया टॉप मोस्ट सर्वेंट, नौकर वो भी है, वो भी सर्वेंट ही है, लेकिन टॉप मोस्ट वो बाबू सर्वेंट है। ओके, और वर्ल्ड में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब में। एंड जैसे आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे कि इट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ओके, बताइए आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में ही नहीं, सब जगह होगा। ये तो हम आपको ये बताया कि इकोनॉमिक्स का यूज सब जगह है, लेकिन वाइस वर्सा भी तो होगा। आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैंने बता दिया ना इकोनॉमिक्स कहाँ है, आप समझ रहे हैं ना। इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में आपको जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी बताया, एक डायमेंशन नहीं है वहां। मतलब आप जब मिक्स कर देंगे ना तो चीजें, जैसे आप मान लीजिए लेबर रिफॉर्म कर रहे हैं या एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन का भी तो अगर आपने लिख दिया कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का इशू है, एग्रीकल्चर दिस लिस्ट का है, आंसर आप करते कि अगर ये दिए तो ये क्या हुआ, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से एक लाइन डाला, तो उसको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली आल्सो द स्टूडेंट इज वेरी स्ट्रांग, उसको उसका भी पता है, क्योंकि उसको जाना है तो उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही सारा कुछ इंप्लीमेंटेशन करना है। तो मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी ओरिएंटेशन, ये तीनों होना चाहिए। और कैसे इनवर्ड से आप आउटवर्ड देंगे, कैसे आउटवर्ड से इनवर्ड आएंगे, दिस इज द आर्ट ऑफ राइटिंग। मैंने आपको कैसे इंडिया चाइना का कंपैरिजन करके क्या बताया, पूरा बता दिया कि क्या है। तो ये डिस्कशन है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। केवल 13 साल का फर्क है इंडिया और चाइना में, देयर इज ओनली लैग ऑफ 13 ईयर्स, आप समझिए। लेकिन आज के डेट में एज पर द डाटा ऑफ 2022 चाइनीज इकोनॉमी इज 5 टाइम्स बिगर देन इंडियन इकोनॉमी। तो क्यों, केवल 13 साल का फर्क है पॉलिसी एडॉप्शन एंड इंप्लीमेंटेशन। अब देखिए ये कैसे है, पॉलिटी कैसे कोऑर्डिनेट हो रही है यहाँ इकोनॉमी से, ये देख लीजिए। मल्टी डायमेंशनल जरा सा करें, बड़ा है ये आपके मेंस का है, समझिए कि क्या रहे आंसर कैसे है। वहां क्या हुआ कि 1976 में माओ जेडोंग मर जा रहे हैं, डेंग जियाओपिंग आते हैं। उन्होंने क्या किया, उस समय माओ जेडोंग में वन मैन में सारा पावर सेंटर्ड था, ऑटोक्रेटिक इन नेचर। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हो रहा था, हमने जो कहा वही होगा। लाइक आज के डेट में हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट है कम परसेंटेज में, ठीक है। इसलिए सारे फ्रंट पर ठीक है, लेकिन इस फ्रंट पर हम भी बेकार हैं आज के डेट में, वेरी फ्रैंकली। अब समझिए वो उन्होंने किया, जब डेंग आया, डेंग जियाओपिंग, उसने इसको बदला, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज बीन सेपरेटेड, और उसमें क्या हुआ, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत फास्ट चला। ये रूल कब तक चला, 2012 तक। तो 78 के बाद से जो शुरू होता है 2012 तक एट द रेट ऑफ 10% इकोनॉमिक ग्रोथ चलती है, ठीक है।
उसके बाद देखिए ये हटता है तो वहां आ जाते हैं अब जी जिनपिंग 2013 से। नाउ द पॉलिटिकल सिस्टम गॉट रिवर्स्ड, नाउ अगेन the total political power has been centralized in one person. Now economic reforms again got declined, and so that after 2012 economic growth rate has reduced in China. तो आप देखिए पॉलिटिक कैसे कोरिलेट हो रही है इकोनॉमी के साथ। दूसरी बात, वहां एफडीआई क्यों आया इतना ज्यादा, क्यों अट्रैक्शन हुआ और इंडिया में नहीं हो पाया? तो वहां की सरकार ने तो जो दी, उनको सुविधाएं, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो अलग था। वहां सबसे बड़ी बात क्या हुई, सीख लीजिए, कि वहां लोकल बॉडीज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, पीआरआईज को, लोकल बॉडीज को ऑटोनोमस पावर दिया गया कि आप अपने लेवल से यू कैन ड्रॉ एफडीआई एट योर ओन एफर्ट। और उस लिए क्या हुआ, लोकली वहां फैसिलिटीज ज्यादा अवेल हुई फॉरनर्स को और एफडीआई बहुत आया। हमारे यहाँ क्या हुआ, ये कंसंट्रेटेड एफर्ट नहीं आया, वो सेंटर के लेवल पर रहा, हमारे यहाँ एफडीआई कम आया। वहां के टोटल ग्रोथ का मोर देन 50% एफडीआई फॉरेन है, हमारे यहाँ मैक्सिमम 30% तक गया। तो हाउ जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड पॉलिटी आर इंटररिलेटेड, दिस इज एम्पली एविडेंट फ्रॉम दिस वेरी एग्जांपल। इज देयर एनी डाउट? आप समझ गए। आंसर राइटिंग का 3 होगा पार्ट। फर्स्ट कंक्लूजन, जिसको आप 15 मार्क्स क्वेश्चंस में 40 to 60 वर्ड्स में रखेंगे। मेन बॉडी पार्ट होगा जहां कीवर्ड्स का इलेबोरेशन होगा, और फिर बाद में आप उसको कंक्लूड करेंगे। जब 10 मार्क्स है तो उसको 20 to 30 रखिए, आंसर छोटा फिर कंक्लूजन। हाँ, आपको ध्यान देना होगा कि इन द क्वेश्चंस देयर आर डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड, इलूसिडेट, इलेबोरेट, कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज। इसका मैंने मतलब बता दिया कि क्या क्या होता है। When there is critically analyzed, then there is some space for an individual, कि आप अपनी भी बात रखिए। और जब elaborate है, simply you have to go with the statement and detail it, and never criticize the government's policy. If this is wrong, you can say, explain it in the way that this was the demand of the time, and in that very perspective, this was done. Okay, and after that, what should be studied? Clear? क्लास नोट्स के बाद सभी अच्छे सर हैं, एक एक रेफरेंस लीजिए, अपने अपने बताएंगे, मैंने अपना बताया। अब उन्होंने, शुभम जी ने कहा था कि एक डिबेट्स देखिए उस पर। मैं आपको बता रहा हूं दूसरी चीज। पहले राज्यसभा सबसे बढ़िया था, राज्यसभा मर्ज इनटू 2021 इन संसद टीवी। ओके, उसमें 2 देखिए, फर्स्ट वन इज पर्सपेक्टिव, सेकंड वन इज डिबेट। अल्टीमेट डिस्कशन, ऑल द नोटेड स्पेशलिस्ट डिग्निफाइड पर्सनालिटीज आर देयर। Perspective and then debates. These 2 programs. Okay. Weekly DD न्यूज का बिजनेस न्यूज देखिए। एंड वीकली इंटरनेशनल करंट अफेयर का डिस्कशन आता है डीडी न्यूज पे, नॉट संसद टीवी। Maximum questions in current affair are directly asked from there in UPSC main. और हिस्ट्री का क्वेश्चन जब भी आर्ट एंड कल्चर से करें, जब भी, वेदर दिस इज फ्रॉम एंशिएंट, मेडिवल, वहां पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट जरूर मेंशन करें उसके डिस्क्रिप्शन के अलावे। ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि जब भी कोई स्कल्पचर होगा, वहां इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द पैटर्न, 2 फैक्टर है। आपने सारा डिस्कशन कर दिया, लेकिन ये चीजें आपने नहीं बताई तो समझ आएगा लड़का ऊपर ऊपर से जान रहा, लड़के को बेसिक नॉलेज नहीं है। इसलिए जब भी आर्ट कल्चर जहां भी होगा, कोई भी मंदिर इतना रिच क्यों टेम्पल, उसका बेसिक यही है, पैट्रोनेज मिला, लोगों की आस्था उसमें रही, तो वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। अभी आपको बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया कि मुगल पीरियड में सबसे रिफॉर्मिस्ट एज रहा अकबर का, लेकिन गोल्डन एज शाहजहां के एज को कहा गया, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाज ऑन द पीक एट दैट टाइम। और इसलिए देखते इतना स्कल्पचर है, तो सब कुछ आपको बता देंगे, ये रेड था, ये येलो था, ये स्टोन था, लेकिन ये नहीं बताएंगे, तो ये चीजें समझ जाएगा द स्टूडेंट हैज शैलो नॉलेज। ओके, सो एनी क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि एम्पली आप लोग को आंसर राइटिंग के बारे में पता चल गया, मटेरियल के बारे में पता चला। अब देखिए जरा न्यूज़पेपर और करंट अफेयर में लिखिए। न्यूज़पेपर
अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, जरा कंडीशनल है, तो आप द हिंदू देखें, उसमें मैंने स्पेसिफाइड कर दिया एडिटोरियल, बिजनेस एंड वर्ल्ड अफेयर, 3 चीज। स्पोर्ट्स देख सकते हैं प्री के लिए, मेन के लिए नहीं, ठीक, अगर अच्छी है तो, नहीं तो TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया। और सेकेंड जो मैगजीन पढ़ेंगे वो एक और पढ़िए, ओनली एंड ओनली प्रतियोगिता दर्पण इंग्लिश मीडियम। नो मैगजीन इज अवेलेबल बेटर देन दिस फॉर प्रीलिमिनरी, प्रतियोगिता दर्पण अल्टीमेट मैगजीन, फैक्ट एज वेल एज कॉन्सेप्ट। मेंस के लिए जो आपका 4-5 इशू होगा, IR एंड करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली IR, डी फोकस करके एक आती है जर्नल, डी फोकस। करेक्ट। तो प्रतियोगिता दर्पण आपको प्री में सबसे ज्यादा आपको मदद करेगी, ठीक है। मेन में आपको फोकस सबसे ज्यादा मदद करेगी करंट अफेयर्स और IR के लिए। उसमें टीचर जो क्लास में बताएंगे, और एक किताब मैंने आपको बताई है नितिन सिंघानिया की, सिंगल लीजिए, अगर आपको टाइम हो तो एक बुक का नाम लिख लीजिए, अनशैकलिंग इंडिया, अनशैकलिंग इंडिया बाय अजय छिब्बर एंड सलमान अनीस सोच। अल्टीमेट डाटा ऑन इकोनॉमी एंड सोशल एस्पेक्ट, अल्टीमेट डाटा, released in September 2021. Okay. Any questions from any side? Thank you. एक्शन एजेंडा, तो वो इकोनॉमी के लिए 2 मिनट में आपको बताइए। ये इकोनॉमी के लिए नहीं है, जैसे 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन का था, वैसे ही नीति आयोग के 3 फॉर्मेट है रिफॉर्म्स के, शॉर्ट टर्म के 3 ईयर, फिर है 7 ईयर्स, फिर है 20 ईयर्स। तो इससे आपको लेना देना नहीं है, वो आपको क्लास में बताया जाएगा क्या है। सबसे ज्यादा जिस साल, द ईयर इन विच यू आर गोइंग टू अपीयर इन UPSC, प्लीज गो थ्रू एक्सटेंसिवली through economic survey, first chapter 1, chapter 2, and then external sector. Only 3 chapters are required. If you need, please note down. Chapter 1, chapter 2, and external sector, which very chapter you may also consider agriculture. But these 3, chapter 1, chapter 2, and external sector, are extensively useful for you. That very year in which you are going to appear in UPSC. Suppose for this year, 21-22, always economic survey is 1 year back. Okay, so if you are going to appear in 2023, then there will be 22-23, and budget will be 23-24. Budget has no importance for preliminary at all. This is only an approach paper or orientation paper that where government is going to focus. That will be implied in writing your main paper. Okay, but data-wise, fact-wise, no importance at all of budget. Totally importance is given to economic survey. How the economy has performed in the last year. This is the sense. Correct? Any question? Thank you.